on Wednesdays to have our community service club activities. That community service is not possible without understanding national service, because community service is intertwined with national service. And to understand national service, we need to understand our constitution, we need to understand our fundamental duties. Because fundamental duties are the template that help us to understand what is expected from us, from the great nation of India. Now, there is a great president of America who has famously said, ask not what your country can do for you. Fundamental rights. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Because people are so much aware about their rights. What are our rights? We keep on talking about rights. But the integral part of, or the complementary part of any right is our fundamental duties also. Because when we practice our rights, somehow someone else is practicing his duties only, then you are able to enjoy your rights. So when you are infringing the right of someone, that means you are not doing your fundamental duty also. That was the first duty of an individual, right? Why we need to respect our constitution? Because constitution not only asks you to do your duties, it also gives you, guarantees you certain rights. Azad, Rajguru, Sukhdev, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, they all lived and died for this country. You will give happiness to the people, those people who will see your photographs. If you are a cricketer and you play like Virat Kohli, you will be able to win trophies for India. And if you are a captain like Rohit Sharma, you will be able to plant that national flag again to some foreign soil, and so that our chest will surge with pride for our country and our nation. So attaining excellence is also. So these were the 11 fundamental duties that I wanted to discuss with you, because we must, with a point of departure, we must understand what are our fundamental duties. Only then we can freely, with an open heart, can venture upon to community service. Thank you so much. उसका आता है यूनिट प्लेस 7 आता है, उसको भी ताली बजा के पास कर देगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 1 out 1 2 3 4 5 6 9 10 11 1 1 2 3 4 5 out 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 28 21 तो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग मदरबोर्ड। ठीक, अब मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं? एक तो ये हमारा होता है फैन। ये फैन का वर्क क्या होता है? जो सीपीयू रहता है प्रोसेसर, उसको ये कूलिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसके नीचे जो है, इसी के नीचे यहाँ पे ये प्रोसेसर लगा है। ठीक, उसको कूलिंग करने का काम करता है क्या? हमारा फैन। ये इसको हम लोग कहते हैं रैम। ये रैम कहाँ पोर्ट होती है? इसका ये रैम का एक पोर्ट है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग इसको फिट कर देते हैं। ये ऐसे, ये हमारे इसमें फिट हो जाता है। इसे दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ होता है। बेसिकली इसको तो वायर दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये क्या होता है? बस। इसको बस कहते हैं। अब इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन वाले पे हम यहाँ लगा देंगे, और एक पोर्ट और जो हमारा लगा रहेगा उसमें बॉक्स में, वहाँ ये वाला पोर्ट हम लोग उसमें क्या कर देंगे? ये वहाँ लगा देंगे।